मैं आपको ना एक बंदा बताता हूँ। सार्थक गोस्वामी, संडे शो से जाना जाता है, यूट्यूब पे चेक कर हाँ, लेना। यस, यस। उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो करी है स्पेशली वर्कर के ऊपर। उनके यस, साथ वो आई थिंक आई सॉ बैठा है, दैट। उनसे बात करी है उसने, एंड वो ये कह रहा है कि ये जितना भी ऑकवर्ड वर्ड कर रही है ना, ये गलत है। साउथ में एक एमएलए ने बोला है कि इफ इट इज इनएविटेबल, लाई डाउन एंड एंजॉय। किसी ने आर वर्ड बोला था आपको? हाँ, अब आप भी तो बोल सकते हो ये, राइट? कि या आपको या आर वर्ड बोला है, सी द आपको आर वर्ड हाँ, बोला है, ऑकवर्ड गोड के फॉलोअर्स हैं, वो क्यों भेज रही है आपको? हाँ, या आर वर्ड बोला है, आर वर्ड, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, जिसके अगेंस्ट वो लड़ रही है एंड लड़कियां बोल रही है, तो ये ऑकवर्ड या गोड बेच रही है। हाँ, that they said I'm coddling men, I'm bootlicking men, I'm be picked up by men. कि हाँ, अभी हाँ, वो न्यूज चैनल की बात कर लेते हैं। दो न्यूज चैनल में एक घुमरो बंदा है, उसके साथ इंटरव्यू करा, और एक वो जी स्विच की लेडीज के साथ करा। दोनों इंटरव्यूअर ने एक भी ढंग का सवाल नहीं पूछा, एक भी। नहीं, नहीं. I wish instead of talking to her husband, she spoke about this campaign with another psychologist to get an opinion of how would this replicate. I wish she spoke with a social activist about this. I wish she discussed with a worker about this. I wish she discussed with a woman. I wish she really spoke with young people. हेलो, दिस इज गोस्ट राइज। आज हम बात करने वाले हैं प्राउड आर वाले कैंपेन के ऊपर, कि कैसे उसने तबाही मचा दी है पिछले 3 हफ्तों में हमारे सोशल मीडिया पे। एंड यहाँ पे मैं इस क्राइटेरिया में बहुत ज़्यादा फिट बैठता हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, अभी से नहीं, बहुत टाइम से गालीबाजों के अगेंस्ट बोलता आ रहा हूँ, एंड एक वैलिड आर्ग्यूमेंट्स उठाता आ रहा हूँ जहाँ पे भी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स नीडेड है। इन द केस ऑफ दिविजा भसीन, ए ऑकवर्ड गोट, उसी की वीडियो को लेके भी मैंने काफी बार बोल रखा है कि गाली वगैरह नहीं देनी, इससे लॉजिकल आर्गुमेंट पूछो। एंड इसी के इसको टैग करते हुए भी मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी है रिस्पेक्टफुल वे में। तो यहाँ पे मेरा बात करना बनता है, क्योंकि जब हम रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं, शी डजंट रिप्लाई अस एट ऑल। कॉपीराइट आ जाते हैं हमारे जैसों पे, मेरे पे नहीं आया, बट काफी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर आया है। एंड हमारे साथ है आज, हमारे साथ मिस कीर्ति। Hi, everybody. Hi, Ghost. Thanks for having me. My name is Kirti, and on Instagram, I go by the handle The Real Therapist. And I'm a psychologist, and I live in the US. And for somebody who don't know what kind of work I do, I work with the marginalized community, which is the economically backward communities here in the US. And मेरा everyday काम है कि मैं actually prison और jail system में काम करती हूँ, जहाँ पे I build programs to help these people to be rehabilitated and go back in the society. So as a part of that, all my clients, fit in the criteria of falling within the workers, the trauma survivors, and also the men who actually like come in with crimes. So I, from an education background and also for the work I do, I fit perfectly to talk about this campaign. And also as a woman who also has experienced this kind of like galia and slur online as well as in real life, this hurts me, and this really hurts the sentiments of so many other women as well who don't support this campaign. And I'm glad that today we can talk about this, and I've been voicing about this on Instagram for a very long Yeah. time, receiving a lot of backlash and support from many people who actually agree with what I had to say about this campaign. I only want to express that as this campaign is dividing social media, we are also forgetting that we are not talking about who is actually vulnerable to this, who is mainly affected by this, and we are forgetting about the community which is being softly targeted, and we are not talking about those people at all. So I'm hoping that this discussion can bring us new pointers, and we can talk about some ways of how we can target this abuse online, plus also call out Divija and talk about why this campaign is not a movement that should be continued. या आप मेरे को बताओ कि जैसे ये वाला जो कैंपेन चलाया, इसके रिगार्डिंग आपको कोई चेंज लग रहा है सोसाइटी में आएगा? ऑल दो जो दिविजा भसीन का स्टांस था, जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये कैंपेन शुरू करा, वो कहीं ना कहीं सेंस बना रहा है कि लड़कियों को गालियां पड़ती है अननेसेसरी, आई एग्री विद दैट। लेकिन जो उनका तरीका था, क्या वो आप ठीक मानते हो? मतलब ठीक तो नहीं मानते, मतलब क्या इसके बैकलैश मिले, मतलब क्या इसका रिस्पॉन्स था, और क्या बढ़ा इस चीज सोसाइटी में इस चीज की वजह से?
यस, सो मैंने ना 2 दिन के बाद एक पोस्ट डाला है इंस्टाग्राम में. Sorry, my Hindi is not that great, but the point is the backlash for this hashtag Proud R campaign has also become that people are misusing it and now messaging women, what is your rate? How can we contact you? And they are now hashtagging proud customer, proud investor, kuch bhi. So if the movement was supposed to silence the men, if the movement was supposed to, target the men who are using this online so they will stop abusing women, has it done that? I don't think so. Because Abhi, those who were not a part of this movement, those women who had never consented to be in this movement are getting these kind of DMs. Abhi जो कुछ भी opinion है वो डालो इंटरनेट में, even if तुम्हारी गलती नहीं है तो they will be like what is your rate? ये क्या है? It is normalized to an extent. I wouldn't say normalized, but it has become so easy to add more and more, galia to it in a different way. And they are saying, normalize it because तुम लोगों ने तो बोला है कि you want to be the proud R. यही चीज मैं बता रहा था कि जैसे प्राउड आर का हैशटैग प्राउड आर चला तो इसके बाद लड़कों ने लिखना शुरू कर दिया, घटिया लड़कों ने, कि प्राउड कस्टमर, प्राउड आर बास, तुम्हारा रेट क्या है? एक चीज को छुपाने, एक चीज को कम करना था, उसकी बजाय हम 5 चीजें और नई मार्केट में ले आए. एंड ये अब लंबे टाइम तक चलेगा, ये ट्रेंड अब लंबे टाइम तक चलेगा अनफॉर्चुनेटली. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? Yes, absolutely. And this can even multiply to something else. This is happening online. How sure are we that it is not happening in person? How sure are we that people are putting this in their bios? Like young girls, minor girls, they are doing hashtags. How do we know that this is not multiplying into the schools, colleges, other communities, that they are now verbally being targeted, saying proud customer or what is your rate, and all of these? How are we protecting those vulnerable people? I don't think this movement had any idea about what this will transpire into. This campaign never talked about how are we going to protect the people when this will happen. It only talked about, yeah, I got this, and it also started with just one person, right? So Divija ka idea tha ki she got this backlash, she got these online abuse, and nobody is like saying that that is justified. She got this and she got the idea of making this proud hour. Uska recent interview mein unhone bola ki the only person she consulted about this when she wrote the script is her husband. So the husband has probably never heard the word R. And जो ऑनलाइन में हम लोग इस वर्ड को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका इफेक्ट इज नॉट द सेम व्हेन वो गाली सुनते हैं. I grew up having heard that word as well, and the effect of the tone, the word, the vulgarity that is associated with it doesn't sit well with you. So you consulted with the wrong person. You didn't even consult with a female who actually like heard the word, and that is a big concern, that you haven't even approached the right people before you started this campaign, right? And then the next thing, if you think about it, she wanted to talk about her own self, and that reflected with a lot of girls. They came to her saying, हाँ मेरे को भी गाली देते हैं घर में. But instead of protecting these girls, what you have done is you have said, this allows me, this, मैं जब ये बोलती हूँ, मैं ये जब हैशटैग डालती हूँ, तो it empowers me, तो you also do it. Right? As a therapist, that is a no-no. It never works. Everybody's healing is so unique. सोचो कि अभी कोई लड़की है जो she doesn't have the self-confidence, self-worth, willpower to actually stand this for a very long time. She puts the hashtag proud R in her bio, but then she gets this backlash from people again and again and again. What is your rate, proud customer? सब कितना दिन वो जेल भाती है. Everybody is not having the same support system, same coping mechanism like Divija Basin. Divija Basin, as a therapist, as a psychologist, should be knowing that, right? Everybody's coping, everybody's healing, everybody's trajectory towards that is very different. So I think that this movement did not take into consideration of how this will multiply, how this will impact the healing of everybody. It just was like, okay, it works for me, so it is going to work for everybody. But यही हम therapy में बोलते हैं, it's not one size fit all, right? It is very unique for every person. How they feel empowered is very different. I think it failed in that aspect as well.
एक्चुअली जो आपने बोला कि उसने सिर्फ अपने हस्बैंड से कंसल्ट करा इसके बारे में एंड जाके बोल दिया, बेसिकली शी इज लिविंग इन हर ओन एको चैम्बर, जहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी अपने आसपास के लोगों से बताई और वही जो उसको सुनना था वही सुना एंड वही आके वॉमिट कर दिया पूरा सोशल मीडिया पे। ऑल्सो शी विल से कि मैंने छोटी छोटी बच्चियों से बात करी है, जब उनके पेरेंट्स उनको आर वर्ड बुला रहे थे, शी विल, यही एक आर्गुमेंट आएगा बीसी की साइड से। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, क्या वो 5 साल की बच्चियों की तुमने बायो में लिखवा के ठीक कराओ? बच्चे भी वो वाले जो अपने बायो में डाल रहे हैं प्राउड आर, वो भी इसी की आइडियोलॉजी से बोल रहे हैं हाँ हमारी दीदी हमारी मामा गोट ठीक कर रही है। आप मेरे को बताओ कि आपको ऐसा करके कौन सीरियस लेगा, जब आपको नॉर्मली बात करते हुए कोई लड़का सीरियस, ज्यादातर लड़के सीरियस ले ही नहीं रहा, क्योंकि नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर कैंपेन प्राउड आर की वजह से आपको हेट मिल रहा है, उसके पहले भी हेट मिल रहा था। आपको हेट क्यों मिल रहा था? अतुल सुभाष के केस के टाइम से हेट मिल रहा है, क्योंकि आपने ऐसा वल्गर वीडियो बनाया जहां पे आप पूरा का पूरा विक्टिम ब्लेम कर रहे हो और पूरी की पूरी लाइमलाइट फेमिनिज्म पे डाल रहे हो कि डिस्क्रेडिट कर दिया फेमिनिज्म को। बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म के फ्लैग बेरर जो आप बने हुए हो, आपकी हरकतों की वजह से उसको डिस्क्रेडिट करा। एंड इसको भी छोड़ो, ये तो वो बहुत बड़ी बात कर दी, यहाँ पे भी आपको काफी हेट मिल रहा था, इससे पहले भी हेट मिलता था एंड उसकी बात करते हैं आज क्यों? क्योंकि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पीपल ऑन सोशल मीडिया आर सेइंग कि दिविजा बसीन इतना अच्छा कंटेंट बनाती है, मेरे को इसकी वीडियो बहुत लॉजिकल लगती है। एज अ लड़का, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं बता रहा हूँ कि गलती क्या थी। ये पहले 2023 में जितनी वीडियोस बनाती थी फेमिनिज्म से रिलेटेड, हमेशा मेन को एक बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे करती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेन की साइड तो बताती नहीं थी कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। सेकेंडली वो एक फिल्टर लगा के आती थी, स्नैपचैट का पता नहीं, मैं यूज नहीं करता, होमोसेपियन का, कि मर्दों को ऐसा बाल वाल मोटा भद्दा, एकदम इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लड़कों की साइड से दिखाती थी एंड उनको कितना नेगेटिवली पोर्ट्रे करती थी। कितनी वीडियोस बनाई एंड इस चीज को लेके काफी सारे लड़कों ने ओवर टाइम हेट बना ली। एंड ऊपर से साइमल्टेनियसली ये आर वर्ड, बहुत सारी गालियां नॉर्मलाइज होती जा रही थी इस टाइम पीरियड में। एंड दिस इज द रीजन एंड दिस इज व्हाट वी गॉट इन द एंड। वहां से वो रेडिकलाइज करती गई अपने ऑडियंस को, यहाँ से लड़के भी होते गए अलग अलग कंटेंट क्रिएटर को या चीजें देख देख के। कहाँ पे जा रहे हैं हम इसको देख के? इसके बाद आपने लिख दिया, अगर आप यहाँ पे वैसे बंदे होते ना कि जिसकी बहुत लोग बात मान रहे हैं, कोई एक इन्फ्लुएंशियल, मतलब एक पॉजिटिव बंदा होता, लड़के भी सुन रहे लड़की भी सुन रहे, अगर आप तब जाके हरकतें करते ना, तो थोड़ा सा ना लड़कों के अंदर खुद सेंस बनती कि यार इनको क्या हो गया, इनके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा कि इन्होंने ऐसा बोला, कि अपने आप को ही खुद बोल रही है, कितना दुख सह रही होंगी। बट ऑन योर साइड, आप यहाँ पे इतने टाइम से जो गंदगी फैलाते हुए आ रहे हो लड़कों के अगेंस्ट, अननेसेसरी, मैं हार्श वर्ड अभी भी यूज नहीं करना चाहता, बट ये अपने आप अंदर से निकल रहे हैं। जैसा आप लड़कों को पोर्ट्रे करता आ रहे हो इतने सालों से, एक दिन में नहीं जाएगा। अभी भी मेरे को बुरा लगता है कि आपको फालतू की बातें सुननी पड़ती है, बट आई नो कि आज के टाइम पे आपको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप फोकस ही इसी चीज पे करते हो। आपको शताब ने, ग्लूकोस ने कितनी बारी रिस्पेक्टफुली कॉल आउट करा, आपने उनका कभी भी रिप्लाई नहीं दिया। तब ये कैसे बन जाता है आपका कि मेरे को आर वर्ड बोल रहे हैं? अरे जो ढंग के रिप्लाई दे रहे हैं उनकी बात कर लो। आप अपनी तरफ से इतना नेगेटिव पर्सोना लेके आए हो लड़कों के लिए, एंड जब लड़के बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि मेरे को ही टारगेट करा जा रहा है, मेरे को ही टारगेट करा जा रहा है। जो ढंग के बोल रहे हो आप उनका सुन ही नहीं रहे, तो फायदा क्या हुआ? दिस इज ऑल कि आपको बस फेम चाहिए, आपको इंटरव्यूज देने हैं, आपका ब्रांड से जो भी आप बेच रहे हो वो खरीदे, आपकी वो ले, थेरेपी ले महंगी महंगी ओवर प्राइस्ड। दिस इज व्हाट यू एक्चुअली वांट, एंड ये इनकी ऑडियंस को नहीं दिख रहा। Yeah, I 100% agree. You know what? You raise very good pointers, Ghost, or I want to add something. The backlash is not just on men. The backlash is also on women, like Awkward Goat and her family of goats, however she refers to them. They also target women who have a different point of view. I have been doing mental health videos. For me, I don't take clients from Instagram. I already have a government job. And for me, it's only about awareness. Until a point, I've been seeing Divija for a very long time. She's been doing mental health videos, and undeniably, she has this influence. I agree with that. But I think a couple of weeks ago, when I first started my video against her,
I saw that she pulled randomly two men out of the street who said, "We are not feminists, we are opposite of feminists," and she called them potential gravists. And countered that very respectfully. Very respectfully, I countered that. And uske baad wale videos bhi, I did very respectfully. And I've noticed a trend that whenever I call out Divija Basin and Muskan Madan, I get a lot of DMs and comments in my comment section calling me a pick me. I've been asked by other women actually. Men actually have commented on my post saying Didi Didi. Okay. Women have actually asked me, some of them who follow them have asked me, I'm doing this for clout chasing. I'm doing this for client snatching. I'm doing this for getting Divija's fame, Divija's influence. And they've asked me directly questions of like, you're bootlicking men, you're coddling men. इसका सारा comments है, screenshots है. मैंने एक और Instagram reel भी like I did saying how I'm being harassed. And then they asked me, have you been laid yet? Have you been picked up yet? So all of these comments have actually come from women. So what you're saying that they're targeting men, they're also targeting women in a different way to shut women up. So agar you are talking against patriarchy and you are doing the same thing to a section of women who have a different point of view, how is it different? My question is, how are you not a part of the patriarchal system that you're calling out? Right? So Divija's initial content was about mental health, right? When she started it. But when she gained this in following and influencing, I think she used this confidence for like provocation. She provokes people, quick punchlines. She talks about this patriarchal system targeting the opposite gender. She bashes people, rage baiting content. ये मैं नहीं बोल रही, ये सालों से people are doing YouTube videos. She has, everybody knows when Atul Subhash is, it's going to be 1 year since we lost Atul Subhash. When Atul Subhash's passing happened, she didn't even have any empathy towards his death. Forget about the reasons what happened. I'm not talking about the legal system or anything, but ek banda commits. She didn't show any empathy. People have called her out, but ek video tak nahi tha. You can see, is she really a therapist? Your therapist 101 is actually trying to be empathetic towards somebody else suffering, and you actually failed in doing that. You can just be silent. Sometimes silence is a kind of support that you can give. And the biggest thing that Divija Basin fails is she has no ethics. उसके पास ethics ही नहीं है. She is talking about minors. जब ये minor आपके पास आता है, she doesn't even have the minimum common sense to blur the images of minors, to blur their names. She puts screenshots of minors. I am so glad that she is not practicing outside of India. She is not a therapist outside of India. अगर ये US में करती ना, तब तक अब तक उसका license cancel हो जाता, suspend हो जाता, as soon as she exposes a minor. And you know what? Her guts, that nobody can touch her. This is the power of influence, I'm telling you, and it really gives me a kind of sick feeling in my stomach when I talk about this. ये Proud Hour campaign के बाद, Divija Basin called out a guy who was using galia on a minor. Okay, I applaud her for calling out the guy who was using abuses on a minor. But she did the same thing. She exposed the minor. उसने माइनर का फेस ब्लर तक नहीं किया. So she has no ethics. And I've come to find out that she's not even a registered psychologist in India. So there is a body called RCI. India में कोई भी अपने qualification लेके कुछ भी कर सकता है, So there is a body called RCI. I think Rehabilitation Counselors of India कुछ है, license board, जैसे हमारा US में एक license board है, India में है, and she's not even registered there. So she probably has the qualification. I don't even know if she's practicing on an everyday, she's seeing clients on an everyday, what kind of therapeutic lens she uses, if she knows what trauma-informed care is, if she's actually worked with victims, domestic violence victims, if she's having these radical views that she's portraying online, that she's gender bashing men, if she gets a male client, how is her approach? I'm very curious about it. How is her approach? Being feminist is not wrong, but when you are openly targeting another gender, and you're saying that if you don't have my point of view, then you're not even worth living. Because in her comments, I have seen that you should be in Blue Drum. She commented on somebody saying, मेरा पीरियड का
पैड का ब्लड खा और something like Yeah, some yeah, some I BS have seen like that. that, some BS like who talks like this? तुम ऐसे बात करते हो तो तुम में और वो जो slurs यूज करने वाले में क्या फर्क है? You are trying to, you're saying that you want to do this for creating an online safe space for women. तो तुम अपने Instagram या Meta या social media platforms पे के ऊपर जाना, like create a movement for these social platforms to make it tighter, privacy, security, cyber laws, ये सारे elements हैं. Why is your movement not focused on improving that safety? बिकॉज तुमको पता है कि अगर ये टाइट करेंगे तो तुम्हारा रेज कंटेंट भी बंद हो जाएगा. You know, because they do this, you won't have the same influence, you won't have the same continuing following, you won't have the same rage baiting content, that views that are generating for you. Every video of you is targeting another gender. Every video. When was the last time you actually provided any video that was educative content about mental health? हाँ बोलो आप. इसका मैं बताता हूँ. जैसे अतुल सुभाष का केस हुआ था, आप माइक ऑन रखो अपना, माइक ऑन रखो. हाँ. हाँ, जब अतुल सुभाष का केस हुआ था तो एक इसको काफी ज्यादा बैकलैश मिला था. जो इसने वीडियो डाली थी, बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था. लड़कियां एजुकेटेड जो रैशनल थिंकिंग रखती है, वो सब इसको बहुत हद तक बैकलैश दे रहे थे. इसने क्या करा, इसने 2023 पिछले साल की वीडियो, उस टाइम 2024 चल रहा था, पिछले साल 2023 की वीडियो डाउनलोड करी और रीपोस्ट कर दी, जहाँ पे ये बोल रही कि दीज फिल्म की मूवी थी, कुछ लड़कियां थप्पड़ मार रही थी, दीज वुमेन आर नॉट डूइंग थप थप इन अ क्यूट वे, दिस इज ब्ला ब्ला ब्ला, वही कि मर्दों के फेवर में एक छोटा सा वीडियो. ये तो है इसके लिए, बैकलैश से बचने के लिए. और नीचे कमेंट क्या आ रहे थे, ओ माय गॉड, लड़कियां कर रही थी, ओ माय गॉड, बुलिंग वर्क्स, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स शुड गो. Yeah. अपने अंदर से आना चाहिए. एक और चीज मेरे को Classic आपसे पूछना है. blaming. या क्लासिक विक्टिम. अब मेरे को एक और चीज पूछनी थी. जैसे अभी आपने कहा कि आपने दिविजा भसीन पे वीडियो बनाई एंड आपको काफी सारे लोग अनाप शनाप बोल रहे थे. किसी ने आर वर्ड बोला था आपको? हाँ. Yeah. लड़कियां थी. R word. I don't know if they were like लड़कियां, but fake names of लड़कियां, profiles, you know, उनके एक बंदी है गर्ल्स एंड गैंग करके इंस्टाग्राम में उसका है. She has, you know, I really hope that Indian government is actually paying attention on this person's profile. Personally, I actually hope that this video is reaching somebody who's working in the government to target that profile and see what the profile is doing, because itna anti-national movement. I am not, see, I support every religion and whatever they're doing, but you're going against the country and there's anti-national agenda in that Instagram feed. Itna rage bait, itna hate. Sure, like, you know, stop, you know, targeting her. What she's talking is actually logical. There's a lot of like support I get in terms of women and men who say that, you know, first time we are seeing somebody who's counter arguing with a lot of logic and reasoning, and you're very neutral, because I do content on men, women and all genders. I don't believe gender is binary, so I do videos on all genders, all issues, because I believe we all need support from each other. We all are struggling, we all need support from each other. No movement is going to be successful without the support of another gender. At this point of where we are in 2025, we are not there in the old times anymore. Everybody knows what is happening to the other gender. So creating this level of gender wars is creating this division in between people and spreading more hate. And I've had comments from other women using the C word on me. Like, Obviously. it was so disgusting that I had to turn off the comments. यहाँ पे सी वर्ड का मतलब जो लड़के नॉर्मली यूज करते हैं वो वाला नहीं है. जो माँ के साथ सी वर्ड लगाते हैं, ये वो वाला वर्ड है, सी वर्ड. Yes. So I had to, like, this is the first time I am seeing all of this online as well. Or I was like, what the heck? मैंने क्या किया है? And then I deleted those comments and I blocked those people because I was scared. ये मेरा पहला वीडियो का एक्सपीरियंस है. दूसरा वीडियो का भी एक वही एक्सपीरियंस है. तीसरा जो वीडियो किया है मैंने, I did on somebody else, not them, and I didn't get any backlash because it was not them. Fourth वाला वीडियो, again I did on them, and then I got the backlash. I think that ये लोग syndicate में काम करते. This is because I work with the law enforcement here very closely, and I know how cyberbullying also happens. I have a feeling that there's a group of people who work as a syndicate for Awkward Goat or Muskan Madan or whoever this kind of influencer is,
एंड जब भी ये जो वीडियोस आते हैं, कौन बैठ के देखता है कि मेरे ऊपर वीडियो बनाया या नहीं? दिस पीपल ओनली डू दैट, मेरे ऊपर। This is Instagram. There's so many influencers. These people call out other influencers as well. वो लोग बैठ के देखते हैं क्या मेरे ऊपर वीडियो आया क्या नहीं? They sit and wait because they are afraid of collaborations. They are afraid of their social status. They are afraid that people are going to call out their BS with logic and reasoning, and that scares them. So ये syndicate में काम करते हैं, and then ये लोग ना अपने fake profile से people को भेज के they want to target. If it's man doing, then they'll do the copyright strike. Only after I did my first video, I found out about the copyright strike that they do, and then I saw that how she put the copy strike on Shwetab, and I actually sat. एक अभी नया बच्चा आया मार्केट में, छोटा सा है, हाँ. इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा था। हाँ, I saw that also. या उसने छोटा सा वीडियो बनाया, उस पे कॉपीराइट इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आई थी, किसी का लाइवलीहुड, वो 200 उसके 200 सब्सक्राइबर भी नहीं है अभी। Exactly. शुरू हुआ एंड वो तो तुमने कुछ कह भी नहीं रहा था। ही वाज मेकिंग वीडियो ऑन इन्वेस्टमेंट, जो तुम भी देख सकती हो, तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हारी सारी बकरियों को हेल्प करेगा। आई एम सॉरी फॉर रूड लैंग्वेज, बट दैट विल हेल्प यू गाइस। Yes, absolutely. That's nothing patriarchal. Also, also one more thing. जैसे गर्ल्स एंड गैंग की बात बता दूं, जैसे आप किसी को यहाँ नहीं पता, गर्ल्स एंड गैंग ये वो लड़की है जो 14,000 फॉलोअर वाला पेज है, एंड इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पोस्ट डाला था जहां पे ये पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही थी, एंड ये बोल रही थी कि इंडियन आर्मी आजाद कश्मीर में लड़कियों का आर करती है। आजाद कश्मीर इज बेसिकली पाकिस्तान टर्म, जो वहां पे बोलते हैं कश्मीर को, ये आजाद इंडिया से अलग करके, ऐसे ऐसे, एंड ये ऑपरेट इंडिया में होता अकाउंट। एंड मुस्कान मदन बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर 3 लाख फॉलोअर वाले इनको फॉलो करते हैं ओपनली, एंड जब मुस्कान मदन को भी कॉल आउट करो, वो भी बोलती है कि मैं उनकी आइडियोलॉजी से ज्यादा सहमति नहीं रखती। दैट डजंट मीन कि मैं उनको हर टाइम फॉलो, मतलब एग्जैक्टली फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फॉलो मेरी मर्जी में, कुछ चीजें मेरे को पसंद है, कुछ चीजें मेरे को पसंद नहीं है। बट यहाँ पे मैं मुस्कान मदन का टॉपिक ले आता हूँ उठा के गलती से, बट अब बोल दिया तो पूरा कंप्लीट करने दो। अरे जग्गी ने मुस्कान मदन को इसी चीज पे कॉल आउट करा था, क्योंकि वो एक और लड़की साफा हुसैन को फॉलो कर रही है, जो पहलगाम विक्टिम्स का मॉक कर रही थी, ये बोल के कि मैं मर्दों की पैंट खुद उतार के उनको, ये बोल रही थी, एंड वो भी इंडिया में ही है, उसको फॉलो करती है मुस्कान मदन। एंड जब अरे जग्गी ने इसको कॉल आउट करा तो ये बोला कि मैं हर एक को फॉलो करती हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं एग्जैक्टली उनकी जैसी हूँ या उनकी हर बात मानती हूँ। बट जब अरे जग्गी ने इसको 2-3 बारी और कॉल आउट करा अलग अलग चीजों को लेके, ये बोलती कि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है, और जितने भी मेरे कॉलेज फ्रेंड थे जो इसको फॉलो कर रहे थे, मैंने उनको सबको अनफॉलो मार दिया है, जस्ट बिकॉज ही इज कॉलिंग हर आउट। इसने अपने फ्रेंड्स को अनफॉलो मार दिया, लेकिन इसने उस एंटी नेशनल लड़कियों को अनफॉलो नहीं मारा। अब इस चीज, अब जैसे ये सारी चीजें हो रही है, ये बड़े बड़े नाम है फेमिनिज्म के, अभी मुस्कान मदन, ऑकवर्ड गॉड, अब यही चीज, चलो ऑकवर्ड गॉड तो इन सब चीजों, I want to correct you one thing. ये बड़े बड़े नाम फेमिनिज्म के नहीं हैं, नहीं, on social media they are portraying themselves as बड़े बड़े नाम, and they are people who are being radicalized because of their thinking. I don't know, I don't really think what they're doing is contributing to any feministic movement that is bringing any change. What it's making people do is become radicalized, hate other genders, become rebellions. There is no empowerment. There is no actual change that is happening. There is no healing that is happening. There is no care for people who have experienced trauma. There is nothing like that. And right now, if you think about Awkward Goats campaign, मैंने इतना कॉल आउट किया है कि दिस आर वर्ड इज एसोसिएटेड टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी बैठ के, देयर आर पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, राइट? या ऑब्वियसली they have totally not taken that into consideration, and they call this feminism. How is it your feministic ideology when you are allowing to mock up, or you are saying that I'm going to invalidate the suffering, the decades long pain and suffering of many women? ये जो R word का community है, it is not something that has come after social media has come. It is something that has been existing for decades. So you totally want to make that meaningless? How can you make it meaningless? तो मैंने बोला है कि why don't you ban this R word completely?
दे डोंट वांट टू डू बैनिंग बिकॉज उसके साथ आता है अकाउंटेबिलिटी। अगर तुम्हें कुछ चीज बैन करनी है तो तुम्हें वो कम्युनिटी को लेके उसको सेव करनी है। ऑल द पीपल को यू हैव टू मूव देम, मेक देम बेटर इन लाइफ, गिव देम अदर रिसोर्सेज इन कम्युनिटी, गिव देम अ सोशल स्टेटस। ये सब बनाना है, देन यू कैन टोटली लाइक बैन द आर वर्ड एंड देन यू कैन लीगलाइज इट। जो भी आर वर्ड यूज करेगा तो उसको हम लोग ना वी कैन penalize them, but they don't want to do that because that comes with a lot of accountability. वो लोग they don't want any accountability. What they want is this hashtag trend which will create some form of movement and that will die later, but they are not even able to take the responsibility of how is the consequence going to happen if ये बच्ची जो है अभी 15 साल की है, ये हैशटैग डाल रही है, कितने दिन वो जेल पाएगी। ये जो मैसेजेस उसके इनबॉक्स में आ रहे हैं कि तुम्हारा कस्टमर, तुम्हारा रेट क्या है, मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, आपके पास जा रहा है, उसके सॉरी उसके डैडी के पास जा रहा है, उसके मम्मी के पास जा रहा है कि वी आर योर किड्स कस्टमर और वट एवर। How long is that trend going to last? They have no idea of how they're going to protect victims. They don't want to do that because that comes with accountability. They don't like that accountability. That's what I think. सो बेसिकली यू आर सेइंग कि ये ग्राउंड लेवल वर्क करे, राइट? Yes. काइंड ऑफ। So I mean, like, who talks about the R word and consults with the husband? And yeah, I was totally, it's sick to my stomach also that I watched this video of awkward goat's mom and her sitting, and the mom is like saying, I've never heard this word in my life. I've never heard this word in my life. So you've never heard this word in your life. So you don't know how it feels to be actually hearing that word, and you're actually doing this campaign. एक्चुअली ये चीज ना उनको लग रहा है कि जो मेरी फैमिली में हो रहा है वो सारी दुनिया में चल रहा है बेसिकली। Exactly, exactly. ये चीज ना मैंने अपनी वीडियो में भी एक दर्शाई थी कि मेरे घर में ज्यादातर प्रॉपर्टी विमेन के नाम पे है। हमारे घर की सारी औरतों के नाम पे है, मर्दों के नाम पे भी है, लेकिन विमेन के नाम पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। एंड Yeah. लोग कहने लगे कि ये भाई सबके घर में नहीं होता, तो मैंने कहा मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, मैं अपनी ही Yeah. बात बता रहा हूँ, क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक था वो कि अगर घर में मर्द लोग बैठे हुए हैं एंड औरतें लोग खाना बना रही है तो वो अनपेड लेबर का, मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा था काइंड ऑफ। हाँ. बट देवर सिंह कि हर एक के घर में नहीं होता। एंड मैंने कहा हाँ ये हर एक के घर में नहीं होता, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं सोसाइटी से दूर रख रहा हूँ कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि बाद में अगर कभी मैं फोटो डालू वीडियो डालू ऐसे घर पे बैठे हुए तो आप हम पे अननेसेसरी ब्लेम ना डालो, क्योंकि यही Yes. होता है आजकल। तो ये चीज नहीं समझ रही, इसको लग रहा है इसके It's घर में very subjective experience. So मैं बोल रही हूँ कि Yeah. it's very and that is exactly the beginning of our podcast. That's what I talked about. It's very subjective experience. Divya Basi ने क्या किया कि she said that this helps me. This is how I react to this, and I want you to react like that because this will also help you. And that is where she failed as a therapist because she used her power as a therapist. Psychologist और therapist के पास एक power होता है. What the power is कोई तुम्हारे पास प्रॉब्लम लेके आता है तो दे थिंक दैट यू ऑलरेडी हैव अ सॉल्यूशन फॉर देम, right? So they're putting you in a place of power. She misused the power. Instead of talking to them about how they can empower themselves with the tools that they have, she said, this helps for me, so you do this. And she's continuing to do this. So she's failing as a psychologist because वो अपने status में बोल रही है कि I have done this, you also do this. This is a community we have, and I have seen this now that is happening, that she's put this emoji of a goat and a red lipstick, and she's like, this is going to be our little symbol or whatever of this movement, and this is going to become huge. Sorry, but what do you want to be in your life? Do you want to be this activist or whoever who has this failed movement that is not successful, which will fall flat on your face because through this movement you are actually invalidating the real struggles of people who are in that community? Or do you want to be somebody who wants to bring together the women and make a difference for each woman and empower them in a way that they can fight back the slur online or in person in their lives? But she's chose the former because it's a lot easy for her to sit in her home and make this content, right? The other one makes her want to get out and actually do real labor work, and I don't think she's ready for that. और ऑल्सो अभी जैसे इसी चीज पे हम बात कर रहे थे कि इसी को फेस ऑफ फेमिनिज्म आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। जैसे आपने मेरे को अभी करेक्ट करा कि ये फेस ऑफ फेमिनिज्म नहीं है, ये बड़े बड़े फेमिनिज्म नहीं है। बट जो मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जितना मेरे को दिख रहा है, आपने भी ये मेरे ख्याल से अभी फील कर ही लिया, जैसे आपने वीडियो बनाई आपको कितना बैकलैश मिला। देयर इज अनदर कंटेंट क्रिएटर विद 1,41,000 फॉलोअर्स, वो ऐसी लेडीज को, मुस्कान मदन एंड ऑकवर्ड गोड को फेस ऑफ फेमिनिज्म बोलती है इंडिया का।
एंड इतना सब कुछ होने के बाद ये सारी चीजें आपको लगता है कि द यूजेज ऑफ द वर्ड पेट्रियार्की की ओवर यूज कर दिया इसको? क्योंकि मैं ये पर्सनली बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा था ना, वर्ड पेट्रियार्की बीच में आ गया। मैं ये वर्ड यूज नहीं करता, आई रिफ्यूज टू यूज दिस वर्ड, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ना ब्लेम डाल देता है पूरा का पूरा मर्दों पे कि तेरी वजह से हो रहा है सब कुछ, एंड सिर्फ तू ही है प्रॉब्लम। पास्ट में तूने करा, पर पास्ट की बातें अगर बात करनी है तो फिर फायदा क्या, अब फिर पास्ट में ही जीते रह जाओगे। मेरा ये कहना था, अभी पास्ट पास्ट इतना करे जा रहे हो, तो फिर प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? प्रेजेंट में ये सब काम कर रहे हो। मैं रिफ्यूज करता हूँ ये वर्ड को बोलना, क्योंकि फिर पूरा ब्लेम मर्दों पे आ जाता है। एंड फिर जब मर्दों को कुछ सिखाओगे नहीं, यहाँ पे मैं वर्ड अच्छे से बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ सिखाना नहीं है, ब्लेम करना है, तो कोई आर वर्ड बोलना क्यों छोड़ेगा जब उसने कई और से वो घटिया चीज सीख ली है? what Yes. are you Yeah. doing what are you doing Yeah. as a feminist? Are you Yeah. just blaming or are you doing anything? ग्राउंड लेवल पे तो Yeah. बहुत दूर की बात है, सोशल मीडिया पे आप क्या कर रहे हो? देर आर Yeah. टू एस्पेक्ट आज के टाइम पे। Yeah. See, this is the problem that I have with this kind of feminism that is circulating online, right? This kind of feminism is centering the feminism ideology to the own influencer and the creator rather than it's targeting the vulnerable audience. And that's what I have a problem with. So, what these people are doing and the people who are following these feminists are only looking at feminism from a very narrow point of view, thinking about how it affects in social media. Yes, patriarchy is a system, we have to call it out. There's still a lot of change that is needed within that system, but while we actually call out for that change, we also have to acknowledge the change that has already happened. If you're constantly bashing another gender, how do you think the change can happen? So we are talking about, because men also suffer within the same system of patriarchy. Now, if you continue to bash men and other genders, why are we only talking about men and women? We are in 2025 and gender is no longer binary. We have the third gender in India, which has been legalized. So even that gender falls under patriarchy and that gender has also suffered. Why are you not creating content which is open and inclusive of all of these people? Like, why is your content so exclusive, only talking about one part of culture? If you look at them, they also target specifically the Hindu Mahila, right? Their patriarchal system only targets the Hindu Mahila. Why are we not talking about other religions? Are you telling me that women from other religions don't suffer? If you're talking about women suffering exists at every level, micro level, at a larger level, at a corporate level. We have to talk about all of these sufferings, but they selectively choose, and that is what I am not okay with it, right? That is what I keep asking them, is like, why are you not talking about a Dalit woman? Why are you not talking about a Christian woman, a Muslim woman? They all are under this system. They all fall under this umbrella. And why are we not acknowledging the changes that have already happened? The men who are willing to support the women within the system, right? We are calling out and gender bashing all the time. एक्चुअली यहाँ पे एक जो मैं क्वेश्चन रेज करूंगा कि जैसे आपने बोला कि दूसरी रिलीजन की वुमेन को क्यों नहीं टारगेट करते, मतलब मतलब वो दूसरी रिलीजन की प्रैक्टिसेस को क्यों नहीं टारगेट करते जो वुमेन को ऑपरेस कर रही है। तो यहाँ पे काफी सारी लड़कियां हैं जो मैं देखता हूँ कि फेमिनिज्म आज भी इसीलिए नीडेड है क्योंकि अफगानिस्तान में औरतें अभी भी बुरखे में है। ये वीडियो बनाते हैं, डाल देते हैं, 1 मिलियन लाइक, 2 मिलियन लाइक, बहुत ज्यादा व्यूज। बस यही तक सीमित है। कमेंट सेक्शन खोलो, गंदी गंदी गालियां, पेट्रियार्की, द ओवर यूजेज ऑफ द वर्ड पेट्रियार्की एंड द व्यू फार्मिंग थिंग, बस यही तक ही सीमित है। इसके आगे मैं कभी कोई वर्क देखता ही नहीं हूँ किसी का। दिस इज द प्रॉब्लम ना। अब देखो, जब यही चीज मैं कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन देखता हूँ तो मैं रिफ्यूज करता हूँ वही वर्ड को बुलाने के लिए, क्योंकि अगर जब तक तुम वो वर्ड को बुलाओगे, वो कहीं ना कहीं जो मेरा पहले, अगर 3-4 साल पहले अगर मैं वो वर्ड सुनता, पेट्रियार्की डिस्कशन हो रहा है अच्छा खासा, तो मैं उसके साथ बात करता। अब मेरा तो मन ही नहीं करता ऐसे वर्ड सुनने का, क्योंकि यही से पूरा डिस्कशन तुम एक तरीके से ब्लेम डालते हो, ग्राउंड लेवल पे कोई वर्क नहीं होता, वहीं पे खत्म हो जाता है। This is the divide that is happening. That's what I'm trying to say. This is the divide. This is the divide that is happening, that men who really want to talk about issues and actually want to raise this awareness about change that is needed are also suppressed. Women who want to bring that change and talk about men and women want to working together and all genders to be inclusive, they are silenced. So, and also all these my question to all these followers who follow Awkward Goat or Muskan Madan or anybody else who thinks that they are the faces of feminism, today's feminism, revolution, whatever. Have you ever
stepped outside your zone and seen women around your neighborhood who actually suffer? कभी तुम्हारे काम वाली बाई के साथ बैठ के कभी सुना है उनके struggles? We talk about alimony, we talk about divorce. Imagine your काम वाली बाई. You know, I always give this example is like if you have a maid and the maid is, her husband is, you know, leaving her. The maid is not sitting there thinking, oh, how am I going to get alimony? The maid is like, और दूसरा घर मैं कैसे ढूंढूं? Right? I have to find another house now. I have to stretch and work in another house. How is your feminism impacting this woman? How are you empowering this woman? Right? We talk about sharing responsibilities, but we also, yeah. I'll give you a perfect example for this. एक ट्वीट देखा था मैंने जहाँ पे अनपेड लेबर या मेंस्ट्रुअल लीव की बात हो रही थी, ठीक है, कि जब ब्लीड करती है वुमेन तो उनको लीव मिलनी चाहिए, छुट्टियां मिलनी चाहिए, पेड लीव। अब जो लड़की इसके लिए एडवोकेट बन रही थी सोशल मीडिया पे, उसकी काम वाली 2 दिन नहीं आई बिकॉज ऑफ पीरियड्स पेन। अब वो इसके ऊपर रेंट करने लग गई। हाउ? See? Why? Yeah. Exactly. That's exactly what I'm saying. That's exactly because your definition of feminism fits within your circle, fits for you. That's why it centers around your influence, your creator, and जो तुम्हारे जैसा सोचता है, तुम्हारे जैसा, like, you know, I did a video of saying this kind of feminism that is circulating online by some people. For them, it is about you. If you are not living a similar life like mine, you're not even like worth living. You're not even like worth considering. Your issues are not even big enough. But the truth is, there's women in every walk of life who are empowered in their own little way. There's a lady who is like Life of Pooja, I think her Instagram handle is. She's in a rural town, I think somewhere in, I don't know which state. She has learned English and she does videos in English, and unke gaon mein she does a lot of work, right? For me, she's an empowered female. And then there's a man who actually adopted villages in the north, and he's actually going around in every village talking about how we should ban these ugly words. Galia ko kaise ban karte hain? Like, how are we? And he's actually successful. He's doing it for the last 10 years. Now, all these women who are sitting here and who are telling me and other creators who are going against the Proud Hour movement, they're saying that we have tried this, that has not worked. We have tried this, educating men, ye nahi hoga, wo nahi hoga. This patriarchal system is always suppressing women. What is this man doing? The man is successful. या एक्चुअली इसके ऊपर मैं बोलूं तो मैं खुद इसी चीज के ऊपर पिछले साल से, जब भी अतुल सुभाष का केस हुआ था, तब से ही मेरे फॉलोअर्स आए थे। मैंने तभी कहा था कि भाई इतना रेडिकल नहीं बनना, मेरे को पता है बहुत बुरा हुआ है, वो भी बहुत आगे से हिपोक्रेसी दिखाते हैं, पेट्रियार्की करके सब कुछ बोल देते, अनाप शनाप चीजें बोलते रहते, तुमको ब्लेम करते रहते, तब भी तुम गाली नहीं दोगे। अपनी आर्गुमेंट्स उठाओ, तुमसे एग्री ना करे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिसएग्रीमेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा एग्रीमेंट हो, बट अपनी भाषा सरल रखो, बी पोलाइट। अब ये चीज मैं पिछले साल से करता रहा, काफी लड़के मेरे को खुद बोलते हैं, भैया हम सुधर गए, हम पहले देते, हम नॉर्मली भी बहुत कम कर दिए, जो आपस में दोस्ती वगैरह में देते हैं। अब ये चीज मैंने करी, ठीक है। अब मैं साइड बाय साइड वुमेन की जो टॉपिक्स, पीरियड्स के बारे में, पैड्स के बारे में, इन सब चीजों के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि लड़के जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो सीखे। वायरल I mean, you're doing a great job, Ghost. You're doing a great job, and that's one of the reasons why I agreed to like collab with you to do this, is because your content has no ugly language towards females or even males as well. You actually call out on people who do this, because you know we all know that a larger change needs to happen if men change the way they talk. We all know that, right? We can sit here, we can argue, but this system is dominant by the male gender, and we need men to make those changes. And you're a part of that movement who's actually supporting that change. So, you know, and the fact that these feminists don't acknowledge the men who actually are a part of this movement to support them is also sad. Instead, what they do is they strike maar dete hain. I believe even Shwetab was a part of that. Shwetab respectfully disagreed with this person, but he never used any galia. Why does he need cloud chasing? He's doing videos since
a very, very long time. Very long Right? time. He has like 6-7 times more subscribers. He's reached a very high level. He's influencing a lot on more people. If he has the power, he can be like, you know what, this is my ideology, follow this. But he's creating educative content that actually creates impact in people. So we are not even acknowledging the other gender. We have come to a divide of like hating other people, and that's not how we should be living. We need more compassion. We need healing and growth. आप क्या बोलना चाहोगे इस बात पे कि पिछले साल जब ऑकवर्ड गोट से पूछा गया था कि तूने शताब की वीडियो पे पहला कॉपीराइट क्यों मारा, ये स्पिल बी के अकाउंट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, वो बोलती किसी एक कमेंट मतलब मैसेज बॉक्स को कि शताब ने बहुत सारे गंदे गंदे लड़के भेजे, यहाँ पे आर थ्रेट, डेथ थ्रेट्स, ये सब दे रहे थे। ये ऑकवर्ड गोट का स्टेटमेंट है। शताब ने बोला मैंने तो नहीं भेजा, कब, कहाँ, कौन सी जगह पे आपने मेरे को बोला है? उसके बाद शताब ने ये बोला था कि तुम बल्कि किसी भी लड़के को पोटेंशियल आर बोल देते हो। एजे बहरफ की बात कर रहा हूँ, जिस पोटेंशियल आर बोल दिया था ऑकवर्ड गोट ने। अब आप भी तो बोल सकते हो ये, राइट? कि आपको आर वर्ड बोला है, आपको आर वर्ड बोला है, ऑकवर्ड गोट के फॉलोअर्स हैं, वो क्यों भेज रही है? आपको आर वर्ड बोला, आर वर्ड, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, जिसके अगेंस्ट वो लड़ रही है एंड लड़कियां बोल रही है, तो ये ऑकवर्ड गोट बेच रही है। That they said I'm coddling men, I'm bootlicking men, you know, I've picked up my men. Even yesterday तक मैंने बहुत सारे respectfully एक वीडियो किया है where I was asking Divija that in a recent interview you said this, you know, but why didn't you say this? And I was doing very respectfully. But then I had somebody in the comment section saying, oh, now you got successfully picked up by a 6'2" male because one guy liked my comment. You know, that shows how much they have been convinced in their head that कोई भी हमारे logically कोई argument देता है, we have to protect them. And I fear for these people that, you know, that would they even protect their mom as strongly with those strong feelings? I really get scared for these girls, young girls. They have a future ahead of them. You know what, whoever is listening to this, awkward goat की life set हो गई है, awkward goat की life secure है, मेरी लाइफ सिक्योर है। यू नो, तुम लोग अभी शुरू कर रहे हो, यू आर जस्ट लाइक 15, 16, 17, 18, 19, 20. You know, life when you're in 20s, I'm telling you, I'm in my early 40s, I'm telling you that when you're in your 20s, life happens very fast, right? And you have lot of experiences and lot of things that shape. If you already, you know, subjecting your mindset to a radicalized opinion, you're narrowing your worldview. You are not allowing to see the change that can happen in this world, and that is very harmful for you to live in the society. Very harmful. And this is the reason why I see this, you know, if you look at this is why radical thoughts wale politicians, people, they don't survive very long. They are called out a lot. They're called out a lot. I don't know if you guys follow the news in the US, but there was a very recent incident a couple of months ago about a radical, you know, thought process, a person who was assassinated in public. Strong thoughts are, strong ideologies are good, like they're good, these are really helpful to make changes, but जैसा आपका like thought process बाहर आ रहा है, ये hate speech spread हो रहा है, no, don't do that. Hate से कुछ नहीं होगा. You are hating each other. And मैंने श्वेतब का वीडियो देखा, श्वेतब खुद responsibility लिया, बोला कि show me one piece of evidence that says that I have sent these people to you. I will take full accountability. He said that. He said, you're telling me that I sent people, I have been doing this for 1 year to target your account, to target you, to shut you up. You know, I hear you. I empathize with you. But show me one piece of evidence कि श्वेतब ने ये बोला है, then I will do. The reason why people are attacking you is because your own ideologies are coming out from your own mouth. That is why. If you sit on national media or like if you sit on mainstream media or social media and say, Atul Subhash's death is justified, even women who heard that got really angry. Other genders who heard that got angry. So you will receive some backlash. Obviously. जैसा हमारे मुंह के से आता है, the reaction is, the criticism is coming from that. It is not because people hate you. I mean, you know, I'm not denying that you're not getting these hate messages.
and those have to be stopped. But you are fighting with the wrong audience. If you want stricter, safer policies, fight. Why are you not fighting against it? She was literally stammering in her recent interview when she was talking about meta security. Literally stammering. No idea. I was not sure. I don't know what. I didn't think. I don't know. My husband told me this. She was not talking like this word salad. She had no idea about how to target meta security, how to actually like improve digital. She didn't even bring an expert. She didn't even bring an expert in the discussion of saying, oh, this person is IT privacy or like IT security person that I'm working with within my feminist circle. And this is their view of how we can reform cybersecurity. I'm not working in that. So I don't know the exact terminology of all of this for the audience, but she didn't even bring an expert. ये खुद उसके माइंड के अंदर चल रहा है. तू इतनी इंटेलिजेंट है क्या कि तुमको सब कुछ सबके बारे में सब कुछ मालूम है? You didn't even take expert opinion of a lawyer. You didn't even bring a lawyer in the discussion saying, okay, we already have a section in the Indian law which says that if you target the modesty of a woman, you are penalized. How can we strengthen that law? Did she bring her followers are so many lawyers? Did any one lawyer jump on and say, hey, Devija have a section that if you target the modesty of a woman, you know, you can be penalized, you can be criminalized for that. So how can we strengthen that law? एक चीज यहाँ पे जैसे वो बोल रही कि लॉज के लिए ऑकवर्ड कोर्ट पे ऊपर कंप्लेन हो गई थी, पॉक्सो एक्ट के अंडर बोल रहे थे इसके ऊपर कंप्लेन हो गई है. ये कहती है कि एटलीस्ट आई विल गो इन जेल एज अ प्राउड आर. ऑल्सो कि तुमने उन लड़कों पे कंप्लेन क्यों नहीं करी जो लड़कियों को आर वर्ड बोल रहे हैं. Okay, you know what? You know, there are so many women in our history who have been violated, who went on to become ministers, women who went on to become leaders. They became empowered without having the proud R hashtag. According to Divija, they should all be the proud R. They never sat in any assembly and say, aha, I'm proud hoon. They never said that. You probably know whom I'm talking about, right? Maybe the audience will know whom I'm talking about. The ladies who have been violated. As a politician? Empowerment. Yes. And, you know, no woman, no survivor will take on the proud hashtag. No survivor will take the proud hashtag. Nobody. Because empowerment doesn't come. एक ना मेरे को वो किसी पॉलिटिशियन का ही स्टेटमेंट याद आ रहा है जिसने कुछ आर विक्टिम्स के लिए बोल दिया था कि इफ यू कुड, ऐसा था, मेरे को भूल गया. साउथ में एक एमएलए ने बोला है कि इफ रेप इज इनएविटेबल, लाई डाउन एंड एंजॉय. मैंने उसके बारे में पोस्ट एग्जैक्टली ही सेड द सेम थिंग. मैंने इसके बारे में भी पोस्ट डाला है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिविजा's ideology and the MLA's ideology? Both are humiliating. Both are abusing women who have experienced this. And now, for that, you know what backlash I got is? The backlash I got is Divija's followers said, but you are taking it in a different context. Here, the abuse is happening online. So you are agreeing. So you are agreeing that abuse is happening online. So target the systems that are enabling this harassment. Target system. ये मैडम के पास काफी पैसा है. हस्बैंड के फादर बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ है. बहुत ज्यादा पैसा है. जितना भी मैंने रेडिट एंड वीडियोस में देखा, 3,000 करोड़ उनके फादर इन लॉ के पास है. मेल फादर इन लॉ, आई मस्ट ऐड, इनके लिए तो. अब इतना पैसा होने के बाद यहाँ पे क्या पॉलिटिकल पार्टी में जाके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते? मतलब खुद ही खड़े हो जाओ. वो तो बनोगे ना. लाइमलाइट यहाँ पे भी तो बनी सकती है आपकी, किसी की भी. See, I don't want to say, I you know what, her father-in-law could be rich, but I'm not going to say that she's actually like milking money from her father-in-law, because I do want to give her credit for her own success, because she has been a small-time creator who actually built a brand. So she has a lot of influence herself. So if you look at Divija's growth herself, she struggled really hard. She built her own profile with a lot of confidence, and kudos to her. I used to love her mental health content when it came in the beginning, but it kind of dipped down when it was like turned into all this provocation. So I don't want to take down any credit of saying that she's doing this for her father-in-law or whatever. However, what I would add in is she has 500
550,000 plus, 550,000 plus or whatever followers, and her reach is spread on different platforms. Her followers include existing feminists, lawyers, engineers, white collar job individuals, professionals, working women, studying girls. There's a diverse population. She has the ability to influence all of these women through her content. So she can also choose to do a campaign that will help women in the right way, but she's not choosing that. अगर वो चाहती है तो वो बोल सकती है कि let's go against Insta, let's go against Meta. She can do an open discussion panel where she'll bring, a doctor, a lawyer, an engineer, different mindset views, different diverse topics that she can bring on the table and say, hey, we have a problem in hand, let's solve this from all this. This is my follower, they have this. She could do this panel discussion and bring in amazing ideas, but then she didn't choose that. But what she actually did was she chose to replicate what she thought is the best idea. She discussed with one person who is her husband. And then the other people are her family members who have never uttered the R word, never used the R word. Mom never even heard the word in the entire life. हाँ, देखो जो मैंने अभी कहा था कि फादर इन लॉ को हेल्प करनी चाहिए 3,000 करोड़, मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं उनको हमेशा बैक में कोई बड़ा रिच पर्सन होता है, जैसे कांग्रेस के टाइम पे आदित्य बिरला, मोदी जी के टाइम पे रिलायंस, मतलब अंबानी जी है, अदानी जी, ऐसी हर एक को किसी को फंड करना ही होता है अगर कोई भी खड़ा हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी। मैं हाँ. तभी कह रहा हूँ कि शी नीड टू स्टैंड अप, जितना कैलिबर Yeah. है, But जैसी I think, हरकतें हैं, वो but बहुत those I think we are, बहुत दूर की but बात you know, होगी वो तो। but I think, you know what, we are in 2025 and we don't even need that, because Awkward Goat just started this proud hashtag R movement, and within 2 days she got called on NDTV, she got interviews with Z Switch, right? So I don't think she used her father-in-law's influence or anybody's influence. She didn't even use her followers' influence. खुद का moment के call out करके she got called on NDTV and she got called on Switch daily Dinkar or Daily Bhaskar, whoever social media, whoever wrote an entire article on her or whatever. So I'm saying that even going on NDTV and Switch, she could have been like, this should be a panel discussion of how we can improve digital safety for women, how we can tighten our law system, how we can break through this to empower women. However, she chose to go on there and be like, why should I not do this? Because I am getting all these DMs. Why should I not talk about this like this? I am getting messages is also like, वहाँ पे जाके she did everything about herself. She didn't talk about all the girls. And then the sad part is, उसके बाद उसने एक और वीडियो किया उसमें माइनर का पूरा फेस एक्सपोज किया। यस, मानती हूँ कि वो वीडियो ऑलरेडी सर्कुलेटिंग है। नाउ हर फॉलोअर्स विल से बट कीर्ति वो वीडियो ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सोशल मीडिया में, मानती हूँ, बट बनता है, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर ओन एथिक्स। जो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। मैं भी खुद ब्लर कर देता हूँ, कभी कभार रह गया हो तो गलती हो जाती है, लेकिन ज्यादातर मैं भी ब्लर कर देता हूँ। ऑल्दो मेरे को यहाँ पे वो बात खत्म करनी थी, जैसे आपने कहा कि ऑकवर्ड गॉड अपने बलबूते पे एनडीटीवी पे आ गई, इतना इन्फ्लुएंस है, बट अगर तुम्हें पूरे इंडिया में वाइड लेवल तक पिछड़े हुए इलाके मतलब टीयर 3 सिटी से नीचे तक पहुंचना है, यू नीड टू बी ऑन ग्राउंड लेवल एंड दैट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्फ्लुएंस तो बहुत लोगों का है। इजाज खान को जानते हो आप? No. एक है, बिग बॉस में आया था, कार्टून है, महाराष्ट्र में रहता है वो, उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड कंट्रोवर्सी करता रहता है, गाली गलौज, केस भी चल रहे हैं, बहुत लाइमलाइट में रहता है। No, I think I saw that person. I think I saw some videos. Yeah. हाँ, तो वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, उसको नोटा से भी कम वोट मिले। इन्फ्लुएंस तो उसके पास भी था, नेगेटिव उसको लाइक करने वाले भी बहुत थे, तभी फॉलो कर रहे थे। लेकिन कितने नोटा से भी कम वोट मिले। तो ये मेरे को अपना पॉइंट बताना था कि जो कैश वगैरह, जो पीछे फंडिंग वगैरह आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे एक्चुअली में जरूरत है ऐसी चीजों को पहुंचने के लिए। जो चीज दिविजा भसीन ने उठाई थी, सोशल मीडिया पे तुम टीयर 1 सिटी तक ही रह सकते हो, टीयर 2 या मैक्स टीयर 3, उसके नीचे
she says that in her interview on Switch. I don't know if you saw that. She I actually saw the says interview. that in the cities we don't use that word. Sorry, in the cities also you use that word. Just that in your circle you don't hear that. Because in the cities there's also women who are subjected to that word on an everyday basis. Yeah, so I don't know what reality she's living in. And one more thing is she points out in her interview that I went in and I didn't get the support. So as a privileged woman, and she called herself a privileged woman, she said that I walked in and I did not get any support from the police. So think about the women who are actually in the work. What kind of support, protection do they get? Yeah, You know, absolutely. what actually hurts me the most is somebody sent me this video of a worker activist who was asked, she was asked in वो जो हिंदी में हो रहा था, and she's that interviewer asked her ये proud hour moment में उसका can you tell us your reaction about it? And the lady said ये लड़कियों को आर होना क्या मालूम है, because these workers उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर चिली पाउडर डाल देते हैं to force them, to convince them to engage in the trade. This hurts me a lot. This actually brought me tears when I sat down yesterday after I did the video on Divija. These workers, कौन सा सिस्टम उनको प्रोटेक्ट करता है? जब वो लोग अरेस्ट होते हैं उनके ऊपर प्रोस्टिट्यूट का थप्पा लगा देते हैं और यही कोर्ट सिस्टम, जस्टिस सिस्टम उनको पेनलाइज करती है. जो मर्द उसको जाके उसको सेल कर देता है, right? They are subjected to this torture. Then they get arrested and then they are sent to maybe safe houses. But those safe houses are worse than brothels. There's a lot of NGOs that actually have called out many of these safe houses. This is the ground reality that is happening, and that is why salute to all these worker activists who are struggling in and out every day, going, empowering these women. It's not easy. And this is not a system that yesterday one of the person under my video, it's so funny, she commented, I don't know where you were, I was on this Aspan CSA case and I never saw your face in the volunteers list. तुम्हारा वर्ल्ड व्यू कितना कम है? तुम सोचती हो और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक ही पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होता है? नो, दिस इज एवरीवेयर. This happens everywhere. Where I am living, it happens. Trade happens. Where you're living, it happens. Women are subjected to this on an everyday basis in the entire part of the world. अभी ये जो लेडीज बात कर रही है कि आपने यहाँ पे हेल्प करी, वहां पे हेल्प करी, मैं आपको ना एक बंदा बताता हूँ, सार्थक गोस्वामी, संडे शो से जाना जाता है, यूट्यूब पे चेक कर लेना. yes. उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो करी है स्पेशली सेक्स वर्कर के ऊपर. उनके Yes, साथ I वो think I बैठा saw है, that. उनके साथ वो बैठा है, उनसे बात करी है उसने, एंड वो ये कह रहा है कि ये जितना भी ऑकवर्ड वर्ड कर रही है ना, ये गलत है, इसको जस्टिफाई Yes. करना बंद करो जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन एंड शी रिप्रेजेंट योर फेमिनिज्म. यही बात Yeah. है, जैसी फेमिनिज्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. Red Kappa में भी बोला है. There's one profile on Instagram, Red Kappa. She is a survivor of this trade, and she made a post saying that she was also against this. वही अगेंस्ट. अब उन्हीं सब पिक मी हो जाएंगी. आपको पिक मी मतलब पिक मी. आर यू मैरिड? Oh, yes, I am. वही तो बात है. अब क्या पिक मी इसमें? अब क्या पिक मी No, इसमें? see, again, the thing is, it's not about me being married and me being in a secure relationship, me having children or whatever. It's not about that. It's about you stooping down to a level to call a woman pick me just because she has a different opinion than yours. Right? अब It is, yeah. ऑपरेसरी ऑपरेशन करने लग गया. अब देख रहे हो? Yes, exactly. Because for every pick me line, I can go and I can counter saying, I am in a relationship already. I could say that, but it fails the counter argument. You are actually stooping down to a level that anybody who doesn't agree with you or your type of feminism or your call out, who doesn't support you, who doesn't join the bandwagon with you, or who is not silent, you call them pick me. ये क्या है? What is this? I could do an entire podcast on just pick me and how dangerous that is, women. And you know what is the thing is, sadiyon se men did this on women. Different upper class did this on lower class.
on marginalized population, when they had the voices against atrocities that were happening, when they had the opinions about how things would change, they silenced them by calling them words, by taking away their privileges, by giving them even more torture, by oppressing them, by not giving them any resources, by violating their rights. How different is Divija Basin's ideology, Divija Basin's followers? How different is this whole thing from what has happened sadiyon se? You know, really, this is so bad. Very bad, just because you have a different of opinion. And also, everybody who has talked against Divija Basin has done it very respectfully. They have not gone into other people's comments. At least me, I have not gone into anybody's comment inbox and be like, you are this, you are that. I have not done any of those. Very respectfully, with logic and reasoning, I have countered those arguments. But this is what they do. आर्ग्यूमेंट्स तो मैं भी कितनी रिस्पेक्टफुली काउंटर करता हूँ. ऑन दी अदर हैंड, मैंने जैसा भी बोला था कि मैं खुद एजुकेट कर रहा हूँ लड़कों को टैबू टॉपिक्स के ऊपर. एंड ऑन दी अदर साइड वी सी दिविजा बसीन अगेन, मेरा ब्लड वाला पैड खा. व्हाट डज दैट मीन? व्हाट? अब देखो, मेरे को शौक नहीं है जाने का वहां पे कि वो क्या कर रही है. लोग बोल रहे हैं मेरे को, ये देखो वो ये बोल रही है, ये बोल रही है. हम भी बोल सकते हैं. आपने गाली देने के लिए मना करा, हम क्यों सीखे इनके बारे में जब ये खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती. ऐसी ये एग्जैक्ट वर्ड है किसी के. I mean, see, men are using words online. Women are also using words online. Men are blaming women. Women are blaming men. We all are blaming each other. I'm not denying. And this is an open thing, right? Now, men have the power to target a woman's modesty. Their galia directly target the character of a woman, and that is where the thing hits for the woman, right? Now, women also like go back and say that you're this. That hits them as well, right? And nothing is what I'm trying to say is nothing is justified online, in person, anywhere that's happening around you. If you're a responsible person, you have to stand up. And people have been messaging me, where were you when Divija was called the word? I didn't know that Divija was called that word. अगर मेरे पास वो स्क्रीनशॉट्स आते तो मैं उनको कॉल आउट करती. मेरे को कितने सारे लोग ना आर बोले. Where were you when Divija was spreading BS all over the social media? Where were you? सबसे पहले उसने शुरू किया. Where were you? Exactly. Where were you? आप खाली आ जाओ कि जब भाई कॉन्सिक्वेंसेस, माना कि जो कॉन्सिक्वेंसेस के क्या कहते हैं, एवरी कॉन्सिक्वेंसेस हैज एन एक्शन. जो भी है, एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस. जब कॉन्सिक्वेंसेस माना कि बहुत बुरे मिल रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ बहुत बुरे नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली काउंटर क्रिटिसाइज करो. बट वेयर वर यू जब वो इतने टाइम से बुलशिट फैला रही है? Where were you? Exactly. See, now all these people, no, in what was really interesting also is in the interview with Switch, Divija Basin said that privilege is also having support from your parents, and these people don't have the support from their parents, right? Now my counter question is, now Divija Basin is saying that जो भी तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे तो तुम उनको बोलो कि हाँ मैं हूँ आर प्राउड लगा दो. Now what if the person in the house gets beatings? Now the verbal abuse has escalated to physical abuse. There's more emotional abuse. There's emotional abuse in society, family, extended relatives. This person is dependent on their parents financially, is probably studying, can't leave the house and go, is stuck in this cultural or society that they are in. How is Divija's campaign supporting and empowering this person? Or if the person chooses to walk out of their house, will Divija Basin protect them? Does she have a support house for all these women who are walking out of their house, who are being called the proud R, for themselves, and now their parents are against them, or they are acting that the abuse has escalated? Does Divija Basin have a support house for all these women? Is she taking accountability for all of these women? I want to know that. First question. दूसरा क्वेश्चन ये है कि आई एम नॉट सपोर्टिंग. नाउ पीपल कैन बी लाइक, आर यू सपोर्टिंग दैट अब्यूज शुड हैपन इन द हाउस? एब्सोल्युटली नॉट. इफ योर पेरेंट्स आर कॉलिंग यू दैट, हाउ कैन यू बी एम्पावर्ड, राइट? मैंने एक पोस्ट डाला है कि हाउ कैन यू stand up and have a voice to stop that happening in your house, right? If a person is calling you that word, it is their conditioning, it is not your identity. So if somebody is calling me the R word, that talks to me about them.
It talks to me about their conditioning in this patriarchal society. It doesn't talk to me about me. It's not my character. It's not my identity. How can you empower this individual to stand up for themselves while they're taking care of their emotional and physical health going through that trauma? That emotional abuse, standing up and calling out in the houses, if they're using that word, saying that this is emotional abuse. You know, how can you actually empower the person? There is no discussion around that. And that looks different for every person. And how would it feel if somebody who's in years of domestic violence, say years of domestic violence, and they've heard this R word every day in their life, okay, Ghost, and finally they are breaking free from that relationship, they are saved from that relationship, and you are now using this proud R hashtag, wouldn't it be re-traumatizing that person? They probably got flashbacks, nightmares hearing that word. Wouldn't your hashtag movement re-traumatizing this person? How is your hashtag movement supporting this individual and empowering them that it doesn't re-traumatize them? She has failed to look at the consequences of this emotionally, and her movement, even though she's a therapist, psychologically, she has put the psychological aspect of this movement on the back end. She has not paid attention to the mental health implication of it. She's only talked about it from a very creator my perspective, her own perspective. मेंटल हेल्थ का पूरा पर्सपेक्टिव खराब कर दिया है सोशल मीडिया पे मैडम ने, सारा का सारा। Yeah. पहले ही लड़कों के बीच में काफी मतलब बदनाम है थेरेपी की, ये तो काफी वुमेन सेंट्रिक है, समझ रहे हो कि ये औरतें लेती Yeah. हैं, मर्द तो मर्द होता है, जो चला आ Yeah. रहा है सोसाइटी से जैसा। अब जब एक मर्द को जब नॉर्मलाइज होना चाहिए मर्दों के बीच में, यू आर वेपनाइजिंग योर होल एजुकेशन बैकग्राउंड, you are Yeah. weaponizing that towards men. Yes. Yes. See, again, so this whole thing, what I want to say is not just about Divija. It is not about just one campaign. This is about ethical content creation, right? ये content creation के नाम पे ethics नहीं है, morals नहीं है, accountability नहीं है, right? Implications की बात नहीं है, कैसे empower करते हैं उसकी बात नहीं है, जो मन में आए वो बोल दिया, वो hashtag हो गया, वो moment हो गया, and then you have the audacity to go and sit on national mainstream media and sit there and say, why shouldn't I do this? I'm so sorry. You're the representation of hundreds and thousands of women who are now putting this hashtag in their bio by sitting in this national media, and you are talking about yourself and why you did this. अगर तुम्हें तुम्हारे बारे में बात करनी है तो तुम्हें डिस्क्लेमर डालनी है कि ये मेरे को यूजफुल हुआ है, तुम लोग मत यूज करो। तुम्हें कोई प्राइवेटली मैसेज किया है तो तुम उसको डिफरेंट तरीके से एम्पावर करती, right? You became the mouthpiece of every person's healing by this hashtag moment, and then now people, without understanding the implications of it, are just like, you know, going crazy about it. There's no ethics around it. हाँ, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे कुछ महीने पहले ऑकवर्ड गोट ये जस्टिफाई कर रही थी कि कैसे सिडनी स्वीनी अपना बाथ वाटर बेच रही है, वो जस्टिफाइड है। I don't know about that. I didn't see about that, so I cannot comment on it. हाँ, so I did not see that video. She was saying कि मर्दों को बोलना चाहिए कि वो खरीद रहे हैं, वहां से वो अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करने का वो दे रही है, लेकिन रिगार्डलेस मर्द तो फिर भी उसको ऑब्जेक्टिफाई करेगा। आई डोंट नो, दीज आर द वर्ड्स शी वाज यूजिंग। See, the thing about awkward goat is she can use any content against the other gender, right? I'm going to give you this example of ये वही awkward goat है जहां वहां पे बैठ के बोली कि जब ये क्रिकेट वाला, you know, when we won it, she sat there and she said that, oh, this is so empowering for women and all of that, you know, she said that. ये वही awkward goat है जो नाउ ये जो मोमेंट हो रहा है जिस पलाश और ये गॉसिप ये सब के बारे में, she made an ex post saying that I'm sitting here and watching the fun of like what is happening about Palash and how many people are like backlashing this and stuff like that. Okay, उसको वहां पे अच्छा लग रहा है. She never made even one post to say जो कुछ भी हुआ स्मृति के साथ, let us give her space. Her dad is in hospital.
She doesn't need any theories, any like gossips at the moment. This is the last thing she wants to see as a woman to other women. Please don't create content. Don't support any men who are creating this content. Please don't talk about this. We don't need to take sides right now. We just need to give Smriti the space, अभी as a कुछ female कंफर्म to भी नहीं another है, female. हाँ, अभी अभी कुछ कुछ कंफर्म भी नहीं। अभी हाँ कुछ कंफर्म नहीं है हमको, लाइक जल्दबाजी में कुछ नहीं बोलना है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पलाश. शी जस्ट मेड दैट बिकॉज शी नोज दैट इफ वो ये करती तो उसको रेज में और व्यूज आएंगे. She's a woman who understands the suffering of another woman. Won't she be out there saying, you know what, everybody, let's stop this for a minute. Let's think of Smriti as another human being. Let's stop all the gossip. Let's not be a part of that discussion. अगर कोई man ये videos बना रहा है तो as a woman don't get triggered by it. Don't engage in that discussion. Let's let it die down. As women, let's stand up to support another woman. She's going through a lot of emotional distress. Has she done a video like that? उसको किसी का सफरिंग के बारे में नहीं, उसको कुछ भी है वो जेंडर बैशिंग ही करनी है. उसका माइंड फिक्स है, उसका माइंड फिक्स है. Whatever it is, she'll bash the other gender. She'll find something some way. She will not do any video of how she can empower women in a way that is beneficial for all women. And then this actually works for the other women. Like, people get hype when they listen to rage content. So that's why they like it. They follow her. एक्चुअली यही इसी मेल बैशिंग से याद आया कि लास्ट मंथ या 1.5 महीने पहले मैंने उस पर वीडियो बनाया था. मेरे को ब्लॉक नहीं करा हुआ था ऑकवर्ड गोट ने, कि मैंने कहा जो अपने ऑडियंस को कहता है रिस्पेक्टफुली अनफॉलो ऑल दोस क्रिएटर, बताकर उन क्रिएटर्स को कि आई एम अनफॉलोइंग यू बिकॉज यू फॉलो ऑकवर्ड गोट एंड यू आर इनडायरेक्टली प्रमोटिंग देम, कि भाई इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर, मतलब बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, कि भाई वो अननेसेसरी कॉपीराइट स्ट्राइक मारे जा रही है, बहुत हो गया है, ऐसे तो कोई कुछ बोल नहीं पाएगा. एंड वो खुद कॉपीराइट स्ट्राइक जब उस पे पड़ती है, her ego is so sensitive. Her ego is so sensitive. तुम अपने आप को सोशल मीडिया में रख रही हो और तुम अपने आप को you're having these strong ideologies. Like your ideologies are not even like in between, bro. You are like वो रेज बेट वाली है. अब ये चीज मैंने बोली तो काफी सारे लड़कों ने ये करा, लड़कियों ने करा, एंड सबको इसका रिस्पॉन्स मिला. इसी के बाद उसने 1 साल बाद जाके शताब की वीडियो का इनडायरेक्टली रिप्लाई करा 4 स्टोरियां लगा के, एंड उसने सारा का सारा ब्लेम शताब पे डाल दिया कि ये अनफॉलो करने के लिए कह रहा है. मैंने कहा था मेरे को बोलो आके, वो बोला, मेरे को बोला, शताब पे डाल दिया सारा का सारा. हाँ, और वो बोली कि 1 साल से मेरे को टारगेट कर रहे हैं, एक साल से मेरे को टारगेट कर रहे हैं. सो वेयर इज द एविडेंस ऑफ ऑल ऑफ दैट? अगर तुम्हें 1 साल से टारगेट कर रहे हैं तो वेयर इज द एविडेंस ऑफ ऑल ऑफ दैट? आई एम नॉट सेइंग दैट they are criticizing you and also you criticize other people. एक लड़की जो अपनी शादी करके 21 साल की 22 साल की लड़की शादी करी हुई है, उसकी वीडियो उठा ली, वो व्लॉग बना रही है अपना, जो इसको समझ पर्सनल स्पेस वो पर्सनल स्पेस व्लॉग बना रही है, डाल दिया, उसको उठा के डाल दिया, ये पैट्रियार्की है, ये है, वो है, 3-4 वीडियो डाल दी. उसने कॉपीराइट मारी तो ये बोलती है ऐसे कॉपीराइट नहीं मार सकते. खुद में पड़ी तो बहुत जलन होती है इनको. but did you take consent of that female when you took the video? No, she did not, right? मैसेज करके वो बोलती मैसेज में कि मैंने तेरे भले के लिए बनाई है. कौन सा भला हो रहा है? गालियां पड़ रही है उसको, आर वर्ड बोला जा रहा है उसको. She doesn't care. उसको she doesn't care because it's about her. Because it's about her. Everything is about her. Right? उसका ego इतना sensitive है, तो you should not be on social media. I'm so sorry. You should not be doing content like this if your ego is so small. Like, you know what? I have a small following, right? मेरा following इतना ज़्यादा भी नहीं है, and people think that whenever I do Divija's content that people follow me. They actually don't. By the time I was the first video I did for Divija, I already had like 11,000 followers, and मेरा followers अभी 13,000 है. It's not even that great that of a bump I got. मेरे वीडियो का व्यूज आते हैं, ओके, वीडियोस का व्यूज आते हैं और नीचे कमेंट्स में सपोर्ट आता है. It also tells me that there are a lot of people who don't agree with Divija. That's why they like my content, right? So, my point is, if I am having this small following and there are a group of people who don't like what I say and who comment, you have 500 plus of followers, and you are having this, and I don't even do rage bait content. You do rage bait content. How much more amplified backlash would you be getting?
Hmm. right? So you should be prepared for that, right? And I wonder what your self-care is as a mental health professional and doing this rage content all the time. So tum subah uthe ke you are waiting for rage content to deliver online. What is your mind? What is your body? How overwhelming that is. What is your self-care process that you are living in this rage every day of your life, that you're finding the next rage content to post? How healthy it is for your mental well-being, and how is that making your worldview, narrowing it down? अ, ये जो मैंने सिडनी स्वीनी का बताया था ना, इस पे मैंने वीडियो बनाया था एंड इसको बोला था कि यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, यू नीड टू टेल अदर वुमेन कि ये जो सिडनी स्वीनी कर रही है इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, यू नीड टू एक्नॉलेज दैट कि होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। Yes. जस्ट बिकॉज Yeah. नहीं होने चाहिए वो अलग बात है, लेकिन होते हैं तुम वो बोलो। तुम ऑन दी अदर साइड बोल, दूसरी लड़की लड़की थी उस वीडियो में बोल रही थी, जस्टिफाई कर रही थी कि करो करो करो, कॉन्सिक्वेंसेस तो बताओ इस चीज के। एंड ऑल्सो अभी Yeah. मेरे को अब लास्ट बात मेरे को उसकी करनी थी, जैसे लास्ट अभी मैं बोल रहा था ना कि मैंने लोगों को बोला अनफॉलो करो उन सारे कंटेंट क्रिएटर को, काफी लोगों ने करा, तब जाके इसने रिप्लाई करा था शताब का 4 स्टोरियां डाल के। और उसके बाद इस लड़की ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा चलो भाई अब मुक्ति मिल गई, अब मैं नहीं बनाऊंगा। जब फिर प्राउड आर वाला कैंपेन आया उसके बाद Mm-hmm. इसने जैसे ही एनडीटीवी में गई है इंटरव्यू देने, Unblock इसने किया ना? इसने अनब्लॉक करा मेरे को। Yeah, because ये she wants to दिखा see you. या She wants to, मेरे yeah, को show you. मेरे को दिखाना चाहती है, बहुत बढ़िया करा। क्योंकि हाँ अभी हाँ. वो न्यूज चैनल की बात कर लेते हैं। 2 न्यूज चैनल में एक घुमरो बंदा है उसके साथ इंटरव्यू करा, और एक वो जी स्विच की लेडीज के साथ करा। दोनों इंटरव्यूअर ने एक भी ढंग का सवाल नहीं पूछा, एक नहीं नहीं. I was shocked that the Z Switch, I didn't see the entire NDTV का interview. They were asking about why she started the campaign, but the Z Switch interviewer actually was praising Deveja in the end, saying that you have come a long way, you are looking very different and confident or whatever. However, that person failed to ask, how is your movement going to protect women in the long term? वही What तो is the बात है। kind of protection you are going to give these women and kids for the backlash that they will be receiving, for their mental health, physical health, financial health, emotional health? Like, what is that you're going to give them, right? And also, like, I, as a person, like I mentioned before, I have nothing against Divija, but I, at this point in time, I'm really concerned for her mental well-being, that she has been non-stop doing rage content, provocative content, showing people that she really dislikes the other gender. Like in every bit of her video, even like International Men's Day, her post was like, to all the men who support women or something. Like it was very like hatred towards men. So everything is about hate. So how much of it are you soaking in yourself that you're not able to have any compassion to another human being? So as a psychologist, I am really concerned for Divija's mental health, and if she is actually consulting with other psychologists is another concern, because as a part of your job you are expected to consult and collaborate with other people when you have these roadblocks of thought. I wish instead of talking to her husband, she spoke about this campaign with another psychologist to get an opinion of how would this replicate. I wish she spoke with a social activist about this. I wish she discussed with a sex worker about this. I wish she discussed with a trafficked woman. I wish she really spoke with young people. All she did was took like a bunch of messages that she got, used her own experience, उसका पूरा ड्रेसअप करके ये मूवमेंट बना दिया. एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज शी इज नॉट टेकिंग any accountability for the suffering of real women that is happening. She's totally gone like invalidating this whole thing for other people who are suffering. एक्चुअली जो पहले बात करूं इंटरव्यूअर की, जो आपने कहा कि वो लड़की प्रेज कर रही थी जी स्विच वाली, ऑन दी अदर हैंड वो Yeah. लड़का भी प्रेज ही कर रहा था, घूमरो, वो भी Yeah. कंटेंट क्रिएटर है, ही वाज आल्सो Yeah. प्रेजिंग कि आई सपोर्ट यू ब्ला ब्ला, बहुत लाइक नो जीरो, मतलब एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं ढंग का। जो Yeah, एक्चुअल exactly. क्वेश्चन जो एक्चुअल क्वेश्चन Yeah. मार के ब्लू ड्रम वाला पूछो, क्यों जस्टिफाई कर रही है ब्लू ड्रम को। एक बात और, इसने अपने Do they इंटरव्यू know में about that? I don't know if they know about that. So यार another, इतना वीडियो बना दिया, अब इतने सारे ओपिनियन दे रहे हैं कि ये दिखता नहीं है उनको, 100% I don't- दिखा होगा। again,
don't know, एक right? क्वेश्चन Again, तो we don't know. एक क्वेश्चन तो पता होना चाहिए था, एक क्वेश्चन। In a Proud Hour campaign. Now she started the movement, तो उसको वहां पे लेके आए. But what the journalist failed was they did not address the ethical content behind this, right? They did not ask her, the research that she's done, the understanding that she has about the R word, if she's actually understanding the R word which is coming from Sadiyon, if she's explored how she can make the digital space safer, and what has been her experience over the years of failing to make this space safer is another question. Because वो immediately बोलती है कि I didn't get the support, मेरे को, but she fails to show the evidence that she has approached this in this way and this does not work for her. She has gone to this place and it did not work for her. She said, I messaged them and they sent a crying emoji. I'm like, sorry that they sent you a crying emoji, but you're not even elaborating and talking about it. You're only stammering there and you're making this about your own self, and that I have a problem with that. And the journalists failed to actually dig to that questions, and I wish they did that. ना वो तो करा नहीं, बट ऑन दी, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जैसे बहुत सारी चीजें जो मेरे को लगा कि जो उसकी साइड से बहुत हिपो, 4 जने अगर उसके सामने बिठाते, ढंकेश, श्वेताब वगैरह, लोकस वगैरह, बहुत सारे लोग जिन्होंने एक्चुअल रिसर्च कर रखी थी इसकी हरकतों के ऊपर, तो बहुत ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन निकल जाता। इसने कहा था कि एक चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा बॉदर करी थी, वो एक लाइन से कमेंट आए थे मेरे ऊपर कि इसके साथ निर्भया जैसा हो जाए, निर्भया जैसा हो जाए। बोला था उसने एक वीडियो में, जो सबसे ज्यादा बॉदर करा था इसको, बोला था उसने वीडियो में, याद है ना? Yes. यहाँ पे She actually messaged that on like Shwetab's the story that she put up as well, that Shwetab showed, and she also mentioned that in the interview, saying people said that I should be the next Nirbhaya. How fair is it? It's not fair. कौन बोल रहा है fair है? Nobody is saying it's fair. Obviously that's not fair, लेकिन on the other side you are saying कि ब्लू ड्रम वाला, वहां पे भी तो इनोसेंट ही मरा था यार, वहां पे भी तो इनोसेंट गया था। तुम खुद एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हो, जस्ट बिकॉज लड़के के टाइम पे वो आर नहीं है, मतलब आर वाला क्राइम नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि वो एक छोटा क्राइम हो गया, वो भी क्राइम है। वहां पे भी इनोसेंट मरा है, एंड तू खुद होके 5 लाख फॉलोअर वाली कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? Yes, it's so funny that you say this. मैंने एक वीडियो किया था मेरे इंस्टाग्राम में, बोला कि एक लड़का is suffered from a suicide after being abused by women, and this is the law, that the law does not protect the male victims. And then एक लेडी आती है, शी इज अ फॉलोअर ऑफ ऑकवर्ड गोट, और वहां पे कमेंट डालती है कि तो क्या हुआ, वन डेथ, द मैन वुमेन आर डाइंग, क्राइम, बट आई एम लाइक क्राइम डज नॉट हैव अ जेंडर। पहली बात, एक मर्द नहीं है, कई सारे हैं जो हमारे सामने नहीं आती, एक फीमेल विक्टिम नहीं है, बड़ी सारी है जिनकी लाइमलाइट नहीं बनती, ये समझ नहीं आता इनको बस इनको लग रहा है एवरीथिंग इज अ वॉर। एग्जैक्टली राइट, एंड एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। एंड ये घटिया लाइन सारे क्राइम को एक जेंडर वॉर में धकेल देती है, फिर जेंडर वॉर ही होती है। इसके ऊपर मैं काफी लंबा बात कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया पॉडकास्ट। आई थिंक मे बी हम नया पॉडकास्ट कर सके अलग अलग चीजों के ऊपर। Yes, I am so glad that we had the opportunity to talk and connect with similar views on how we don't agree with this Proud Hour campaign. And like I said, it's not about Divija, it's not about the campaign, it's about how ethical is this campaign, and how is the campaign actually talking about the implications of this, when it's going to replicate and trickle down and go into other people's lives. How is this movement going to support and empower people? Because this campaign fails to do that, and that is the reason why it's actually like flawed. एक्चुअली बट अब देखो, मैं यहाँ पे ऑकवर्ड गोट के, पता नहीं अगर देख रहे हैं एंड तक, इवन दो एट द एंड वो वेल बीइंग ही विश कर रही है ऑकवर्ड गोट को कि वो ठीक हो, एंड मैं भी कुछ फालतू नहीं बोल रहा, थोड़ा बहुत हार्श निकल जाता है, एंड मेरे को पता है जितनी मैं 3-4 साल से सहता आ रहा हूँ, मेरे एटलीस्ट मेरी भी समझो, लेकिन मैं कुछ इतना भी हार्श नहीं बोल रहा उसको, उसकी हरकतें एक्चुअली में गलत हैं, एंड उस चीज़ को कॉल आउट कर रहा है रिस्पेक्टफुली। तो तुम भी थोड़ा रिस्पेक्टफुली उससे जाके क्वेश्चन पूछो एंड उसको भी अकाउंटेबल ठहराओ। So that's it. Yes, exactly. Okay, thank you so much. Bye.